Hello, everybody. Welcome back to my YouTube. And I knew this would happen because of exam season कि मैं active नहीं रह पाऊंगी. But the last video I posted was about starting a new year and all that stuff, and it kind of got a lot of many views. And I mean, it would have been great if those people would have subscribed too. But yeah, anyways, so आज है 9th February and कल है मेरा first board exam of English. So I am nervous, not really, but I don't know, it doesn't feel the same like it used to feel when I was in 10th. 10th के boards का feel and 12th के boards का feel is different, like a lot different. There is a lot of difference in that. But anyways, it's currently 10 almost, and I just had dinner. Yeah, I am I don't know how I feel. Yeah, but anyways, I am getting ready to sleep because I need to sleep early. So yeah, but I have to get some things done. I'm gonna do skincare. Even like skincare, it's not, I don't know, it's not that therapeutic or that self-care, I don't know, for me. But anyways, but yeah, also मेरा फेस वॉश ख़त्म हो गया था, मेरा मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया था. सो आई ऑर्डर्ड फ्रॉम मिंत्रा बिकॉज बाकी सारे ऐप्स के कंपैरिजन में उसमें सबसे कम प्राइस थी. सो या आई एम जस्ट गोना शो यू गाइस. My list का salicylic acid because I have clogged pores and I get a lot of acne that I'm breaking out these days. So yeah, this is, I like how the packaging is. It feels very chemistry vibes. I don't know. I don't know what I'm talking about. But yeah, I'm gonna wash my face and be right back. I'm back and I have moisturizer with me. It's from Plum. It's their niacinamide and rice water wala. And honestly, look at the packaging. I love it so much. It's so pretty. Like, it screams ocean. You know what I mean? Okay. I think I'm done. I literally use this Himalaya ka 10 रुपए वाला lip balm. It's a mini. This and Vaseline does like wonders to the lips. I'm trying not to crash out because staying calm is the key. And I have my stuff ready, kind of. I'll show you guys. So I have my transparent writing board and my hall ticket. And then I have long scale, a new one because I did not have one before. And I have my pouch जिसमें 3 ब्लू पेन्स है, 2 पेंसिल है. I have no idea why इतने सारे. स्केल रखी है, राउंडर रखा है. एंड देन मेरा ID कार्ड भी इसमें ही है बिकॉज आई फील कि मैं ID कार्ड भूल जाऊँगी अपना, तो इसलिए मैंने उसको पाउच में रख दिया. बिकॉज आई फॉर अ फैक्ट आई एम अ लिटिल बिट एंग्शियस और आई गेट वरिड अबाउट कि मैंने सच में रखा है नहीं. और मैं अपना वॉच भी पाउच में ही रख दूँगी बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर कि मैं कुछ ना कुछ तो भूल ही जाऊँगी. I don't know, guys. I'm gonna be honest with y'all, but I don't feel comfortable being at camera. I just don't know. I don't know, guys. A little truth, but I kind of feel weird to shoot myself again. Like, I'm feeling underconfident right now. But yeah, let's just keep going. If I talk about it, I think it will just get worse. Even though I know it's literally quite the opposite. But yeah, I'm gonna drink lavender tea before I go to sleep.
इट इज़ स्टीपिंग, सो हम 5 to 10 minutes उसको ऐसे ही रखेंगे. Are you also giving boards? Are you also giving boards? But anyways, I was just saying कि if you have also boards, if you also have boards, all the best, guys. We're in this together and we are gonna rock it. Okay. Anyways, yeah. So literally मैं novel पढ़ रही थी, and tell me why it is kind of interesting. I find it interesting, I'm not gonna lie. But yeah, ignore the light का जो भी phenomena यहाँ पे हो रहा है. But anyways, I like the one with E-Braid, right? To Serve with Love. To Serve with Love वाला. It's nice. Okay, so Brindisi. Brindisi का आपको किताब में Brindisi न्यूयॉर्क एंड योकोहामा रह गया बीच में. Anyways, I guess 5 minutes is done. 5 मिनट हो चुके हैं. Let's see. A drop or two of the lemon. Give it a little mixy. The reason it's in a Nescafe bottle because हमने उधर एक एग्जीबिशन था, वहाँ से we bought it, and वो ऐसे ही like free loose tea they were selling, तो उन्होंने बस ऐसे मेजर करके, मतलब वो एक प्लास्टिक के इसमें दे रहे थे, like a ziploc bag kind of thingy, not ziploc but like a plastic bag. So इसलिए मम्मा ने ट्रांसफ़र किया उसको नेस्कैफ़े की बॉटल में, because नेस्कैफ़े की बॉटल was खाली. Let's look at my tripod situation. The Oxford Dictionary की हालत, I know it's bad. Sherlock Holmes, the Hound of Baskerville, the Hound of Baskerville, and we have Valley of Fear. It helps you sleep better. I have not seen anyone talking about lavender tea. However, it is always like chamomile या फिर कुछ तो भी वाला chamomile या फिर कोई तो भी और. But I've never heard anyone talking about lavender tea. But मैं इसे एक टाइम था जब I used to drink this every single night, and it was like amazing. I used to sleep good, I'm not gonna lie, and this is not kidding. By the way, 12th की जो English है, it was quite interesting. I mean, all novels and stuff and the history of novels में सारे कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम आ रहे थे, जैसे वर्जीनिया वुल्फ का तो वो येलो ड्रेस वाला चैप्टर भी है, and then Jane Austen, Agatha Christie. I was like, okay, this is interesting. And then chapters be interesting. There was this Into the Wild wala chapter. Love it. So I'll see you in the morning when I wake up. I intend to wake up at around 5. But और जो मैंने वीडियोस डाले थे 3 दिन जब मैं उठी थी 5 AM, उसके बाद दैट डिड नॉट गो वेल. 5 बजे क्या 6 बजे भी उठना, 6 बजे भी नहीं उठती थी मैं. But yeah, it's kind of hard being a morning person for me. But it's kind of hard, मेरे से नहीं उठा जाता सुबह सुबह. And yeah, even though I tried, I could not just wake up at around 5, not even at 6. But yeah, it's fine. और the irony is कि मैंने वो सीक्वेंस करा था 3 दिन वाला, उसमें मैं कभी 5 बजे उठी ही नहीं हूँ. मैं अराउंड 6 या फिर 6:30 उठी हूँ. बट उसके बाद वीडियोज़ के बाद तो मैंने it was like even a hassle for me to wake up at 7 AM. I don't know why. I'm just not a morning person. But if you tell me to study all night, I can do that. But I know that will just mess up my sleep schedule even more. And anyways, I can't wait for this to be just over. And it's finally starting tomorrow after a really, really long wait. But also paper also timetable जिसने भी सेट किया है, with all due respect, केमिस्ट्री के लिए आपने सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी क्यों दी? लिटरली पता है किसका पेपर है? बायो का पेपर है 25th को, और उसके बाद मेरा सीधा जोग्राफी है
बिकॉज मैंने जोग्राफी और आईटी लिया हुआ है। 25 को बायो का पेपर है, 7 मार्च को जोग्राफी का पेपर है। या और केमिस्ट्री के लिए एक ही दिन की छुट्टी है। ओके, that is not a vibe. That is not a vibe. And just sleep, and I'll see you tomorrow. I'm getting ready. अरे थोड़ा बहुत ऐसा फील हो रहा है कि ओके, बट anyways, I'm trying to be calm. It is 9. It is 9:35 and we'll leave in around 10-15 minutes. So yeah, I am ready, guys. Hi. So sorry for the low quality, but I'm too lazy to get up and switch on the light. Even though, oh, the switch is right here. But you know what? This is better. So, anyways, English का paper था. Everyone has a personal beef now with the fictional character Sophie from our English textbooks, but doesn't matter. Anyways, रिव्यू मैं अच्छे से करके गई थी, 2 रिव्यूज़, एक फिल्म रिव्यू एक बुक रिव्यू, अच्छे से प्रिपेयर करके गई थी और उन्होंने टॉपिक दे दिया एग्ज़ाम में. But the topic was like a review of a documentary that you watched on wildlife of India. So I'm into that and I know a lot about that. So I wrote it very nicely. Time was manageable, but I panicked at the last moment. So yeah, but anyways, I attempted everything and सब कुछ हो गया लिख के. And novels वाले questions जो थे, MCQ वाला पार्ट तो easy था, but जो बाकी के क्वेश्चन थे, that was, I could write it, but still it was a bit tricky to form my words for some reason. And yeah, overall I would say it went well, but if the first question was only confusing, like मतलब पेपर खोलते ही आप अगर आपको पहला क्वेश्चन confusing दिख जाए तो yeah. But anyways, overall it went well. And yeah, tomorrow बोल रही हूँ, मंडे को है फिजिक्स and I have like 5 days holidays for it. So फील कि उसके साथ साथ मेरे ख्याल से केमिस्ट्री भी पढ़ लूँगी, बिकॉज केमिस्ट्री के लिए कितने दिन की छुट्टी है? ड्रम रोल प्लीज. जोग्राफी के लिए कितने दिन की छुट्टी मिलती है मेरे को? 9 दिन की, 9 या 8, शायद 8 दिन की, क्योंकि 25 को बायो है, देन 7 मार्च को आई हैव जोग्राफी. या मैं आई हूँ, मैंने मस्त लाइक लंच किया है और मम्मा ने बटर मिल्क जो छाछ होती है ना वो बनाई है, माय फेवरेट. एंड उसके बाद मैं जो सोई हूँ ना, आई स्वेयर टू गॉड, मतलब मैं सीधा उठी हूँ, मैं मतलब लंच किया, थोड़ी देर में बैठी एंड आई वेंट टू स्लीप. आई डोज्ड ऑफ एंड देन आई वोक अप एट अराउंड 7 PM आई गेस. एंड देन आई जस्ट या उसके बाद मैं नॉट 7 PM, हाँ अराउंड 7 PM आई गेस. एंड देन आई वेंट एंड टुक एली फॉर अ वॉक एंड देन आई या पढ़ाई नहीं की मैंने because you know you can't blame me, but yeah, anyways, आज एंड देन लाइक मैंने अपने स्कूल के फ्रेंड्स से थोड़ी बातें की, बिकॉज ऑफ कोर्स अभी हम लाइक साथ में नहीं हैं. बट एनीवेज, या आई एम गोना गो टू स्लीप एंड कल से 5 दिन के लिए आई हैव टू लॉक इन, लाइक सीरियसली, लाइक मतलब पूरा लॉक इन. But yeah, anyways, I'll see you. I don't know when. Yeah.
but I don't even know if this vlog is gonna go up or not, because I don't know कि edit हो पाएगा या नहीं, but I will try my best. Thank you for watching. Subscribe, like, and share, I guess. Bye. And all the best जिसके boards है मेरे साथ साथ.